Hello everyone, this is your Amit sir and I welcome you all in English class. Students, today I will start the second chapter of the book Beehive. The second chapter of the book Beehive is The Sound of Music. This chapter is divided into two parts. The part 1 is about this beautiful lady Evelyn Glennie, and the part 2 is about the pride of Indian classical music, Ustad Bismillah Khan. One by one we will discuss this video lecture is about the part 1, which is titled Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. So without doing any delay, let's jump into the first part, which is about this musician Evelyn Glennie. Students, I am just going to give you the quick detail of the life of Evelyn Glennie, which will help you to understand that who is she and what are the qualities hidden behind her personality. Students, Evelyn Glennie is a multi-percussionist. Multi-percussionist means she could play so many beating instruments. पीट कर बजाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को वो बजा सकती है. एंड दिस मल्टी वर्ड मीन्स वह बहुत तरह के बीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को वो प्ले कर सकती है. शी हैज अटेंड अ मास्टरी ओवर ऑलमोस्ट 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विदाउट बीइंग हियरिंग. बिना सुने वह 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा सकती है. एंड she is a hearing impaired. Hearing impaired means she is challenged with listening ability. उसे सुनने की शक्ति कम है and almost वह बिल्कुल भी सुन नहीं पाती है. She learned to feel music through the body instead hearing it through the ears. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कान से सुनते हैं. But this lady, this girl had developed the ability to listen sound from the whole part of her body. Even at a story, जब आप स्टोरी पढ़ोगे तब आप देखोगे कि at one place she had explained that how she listened. वह सुनती कैसे है? The beats को सुनती कैसे है? और वह वहां कहती है कि I feel the high beat फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के ऊपर के हिस्से से, एंड द लोअर बीट्स, द लाइटर बीट्स, हल्की आवाजें फ्रॉम द लोअर पार्ट मीन्स लेग, अपने पैरों से वह सुनने की कोशिश करती है. दैट मीन्स हर होल बॉडी इज द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द ईयर्स एंड वर्क्स लाइक ईयर्स. सो दिस इज द actual summary of the life. Evelyn Glennie, when Evelyn was 11 years old, it was discovered that she had lost her hearing power due to nerve damage. 11 वर्ष की उम्र में ही उसको hearing power में problems आ गए. The specialist advised that she wear hearing aids and be sent to the school for the deaf. बहरों के स्कूल में उसको भेज दिया जाए. On the contrary, Evelyn was determined to lead a normal life and follow her interest in music. She was interested in music and she wanted to continue her normal life. So she worked hard. Even so many people discouraged her, but her potential was noticed by a very famous percussionist, Ron Forbes. Here it is given. Ron Forbes नाम के एक percussionist थे. उन्होंने उसकी काबिलियत को पहचाना, इवलिन के काबिलियत को पहचाना, and he guided Evelyn to feel music some other way. जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि हाई बीट्स को वो हायर पार्ट ऑफ द बॉडी से वो फील करती थी एंड लोअर बीट्स को वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से फील करती थी. ये ट्रिक
रॉन फॉब्स ने उसको सिखाया. दिस रॉन फॉब्स मीन्स रॉन फॉब्स हैड डेवलप्ड द लिसनिंग एबिलिटी थ्रू द होल पार्ट ऑफ द बॉडी. Student, this worked well for Evelyn and she realized that she could sense different sounds through the different parts of her body. She developed this ability. ऐसा कहा जाता है कि जब कोई एक सेंस ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, दैट टाइम द सिक्स्थ सेंस ऑर्गन स्टार्ट्स टू वर्क. नॉर्मली लोगों के पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सम पीपल हैड द सिक्स्थ सेंस. Evelyn had developed her sixth sense and she had changed her whole body. उसने अपने पूरे बॉडी को चेंज कर दिया था to listen the sounds. And she became a very superstar of the world. See, and she presents the concert also. In her concert, people enjoyed lot. और लोगों को हमेशा एक सरप्राइज होता है कि आखिर ना सुनने वाला कोई म्यूजिशियन एक ऑर्केस्ट्रा में कैसे मैच कर रहा है अपने आप को. Once she had overcome this hurdle, Evelyn began her career in music. She got admission in the Royal Academy of Music. आपको पता होना चाहिए कि लंदन का ये म्यूजिक कॉलेज एक ऐसा प्रेस्टिजियस म्यूजिक कॉलेज है जो बहुत ही हाई लेवल का एंट्रेंस एग्जाम करवाता है. एंड दिस गर्ल had scored the highest marks in the history of entrance exam of Royal Academy of Music. Royal Academy of Music ने जितने भी entrance exam करवाए थे उसमें highest marks को score किए and then she enrolled herself in that college, in that academy. Evelyn says that hard work and dedication towards her goal helped her achieve success. यही तो सच्चाई है कि if you are determined to get something, if you are doing hard work to get something, then you will get that. एक और बात है ड्रीम. until the dream come true. सपने तब तक देखिए जब तक सपने सच ना हो जाएं. And this girl had dreamed until the dream come true. इस लड़की ने तब तक सपने देखे जब तक उसके सपने सच ना हो गए. And her dream was not only the illusion and the daydream. She worked to get her dream. Evelyn gives solo performances and even gives free concerts for hospitals and schools. वो schools और hospitals में free concerts भी देती है. In the year 1991, she won the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. And this is the very prestigious award from the Royal Philharmonic Society, Soloist of the Year. Evelyn's story is an inspiration for the different abled who are motivated to fulfill their dreams like she did. इसके स्टोरी जो है वो सिर्फ डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए ही नहीं, चैलेंज्ड लोगों के लिए ही नहीं, नॉर्मल लोगों के लिए भी है एक इंस्पिरेशन. हम लोग हमेशा से अपनी कमियों, अपने एक अच्छे सक्सेस को नहीं पाने का जिम्मेदार किसी न किसी को ठहराते हैं. लेकिन दिस स्टोरी, आफ्टर लिसनिंग दिस स्टोरी, द स्टोरी ऑफ दिस ब्यूटीफुल गर्ल, ये हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है दैट इफ दिस काइंड ऑफ डिफरेंटली एबल्ड अ चैलेंज्ड गर्ल कैन मेक हर नेम इन द कर्टन्स in the mind of the people, then why we can't? So student, this is the keynotes. This keynotes will help you to recall the chapter what you have read. Percussionist and recording artist Evelyn Glennie is almost completely deaf. Keep in your mind, completely deaf, which means she listens to music with her body, not her ears. It is already discussed. The second thing, Forbes. Forbes means Ron Forbes.
Ron Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in the different parts of her body. Evelyn के साथ ये एक्सरसाइज को रिपीट किया गया रॉन फॉब्स के द्वारा, बीटिंग द ड्रम्स इन द लोअर एंड हाई नोट, एंड उसके अंदर डेवलप हो गया दैट शी कुड सेंस द नोट्स, द हायर एंड लोअर नोट्स ऑफ म्यूजिक थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. Evelyn disliked men with bushy hair, bushy beard, as she can't read their lips, they talk. Evelyn एक और एबिलिटी डेवलप करती है कि वो सामने वाले को सुन नहीं सकती है, तो she started to read the lips. In the way we talk, our lips move in a very synchronized way. हमारे lips जो है ना बहुत synchronized way में move करते हैं. So this girl had developed to read the lips of the other people when they are talking, and that's why she disliked the bearded person, because bearded person का lips जो है वो कई बार छुप जाता है उनके मूंछ और दाढ़ियों से. Okay, she referring to the regular concerts she gets chance to perform. The next, she is called workaholic as she never sings work. वह एक वर्कोहॉलिक है. वर्कोहॉलिक मतलब उसको काम करना अच्छा लगता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहती है. She gives a free concert as we have discussed in the prisons, hospitals. She also accords a high priority to the class of young musicians. वो young musicians को class भी देती है. Evelyn's achievements gained through determination and hard work set an example before the handicapped people. Why handicapped people? In front of normal people also. हम लोगों के लिए भी तो ये इंस्पिरेशन है ना. What we have done till now? हम लोगों ने अभी तक क्या किया है? कुछ भी नहीं. Okay? Evelyn won the Royal Philharmonic Society's prestigious soloist. We have discussed this also. Okay? So these are the points which will help you to recall the chapters. What is the moral of the story? Students, the moral of the story is very clear, that we can acquire success in whatever conditions we are in. हम लोग किसी भी conditions में हो, हम लोग success को acquire कर सकते हैं. God has created many of us in healthy forms, but we are always lazy to do things, finding excuses each time. हम लोग हमेशा excuse खोजते हैं कि इस excuse के चलते ये नहीं हो पाया, इस excuse के चलते ये नहीं हो पाया. Okay, but these only excuses to show, not to show, to hide our laziness. ये हमारे laziness को छुपाने का जो है एक सिर्फ एक मीडियम है, एंड उसके अलावा कुछ नहीं है. I hope the explanation of the chapter is very clear, and if you have any problem, then you can comment me in the comment box of my YouTube. And I tell you everything, like my channel, subscribe my channel, and which will help you to get all the videos at the time of examination. So subscribe and share also. This is enough for the today's class. Have a nice day. Enjoy learning. Goodbye.